Nigam, Company Commander and Professor, Faculty of Law, Agra College, Agra, to kindly share your views on court experiences of cases related to POCSO Act and child abuse. Please raise your hands together. Respected dignitaries present here and dear students. First of all, I am very much thankful to Dr. Richa for inviting me. As told, my topic is court experiences related to POCSO Act. As advancement in science has its positive as well as negative aspects, be it use of light, be it use of light, radioactivity, communications, mobile, TV, internet, advancement in science always put position positive as well as negative and impact the society at large. Conduct of society, on the other hand, regulated by a set of rules and regulations. As we all know, society never static since its inception. So do our laws. Laws reflects what means legislatures want to regulate or to curb the conduct of the society. Be it sati prevention, food adulteration, prohibition on determination of sex, termination of pregnancy act, prevention of terrorist activity act, labor laws, dowry prevention act, protection of aged parents, be it protection of child from Sexual Offences Act 2012. We see after 10 years of enactment of this POCSO, an analysis of POCSO cases across India has found gap in its implementation, including increasing pendency of cases and a high rate of acquittals. I just throw light on its background. The Constitution of India incorporated several provisions to protect the right of children, and India has also been a signatory to landmark instruments such as the Convention on the Right of Child and the Protocol 2. But India lacked any dedicated provision against child sexual abuse. In 1990, a child sexual abuse racket was busted in Goa, following which the state government enacted a law to promote child rights in 1993. And in 2000, the Children's Code Bill was drafted. In 2005, Department of Women and Child prepared a draft bill to address different offenses targeted against children. In 2007, the report published by the Ministry of Women and Child Development found that more than 50% children having faced one or more form of sexual abuse, and overall percentage of boys reporting experiencing sexual abuse was much higher than that of girls. In 2010, Ministry of Women and Child Development drafted the Sexual Offences Bill 2010, and POCSO came into force on 14th November 2012. Now come to the main points of POCSO.
I am not discussing the details, but the highlights of this POCSO Act. First, this act is gender neutral, means victim is either girl or boy below 18 years of age. Second, in a case where accused above 18 years and victim below 16 years of age and serious sexual assault apparently charged, then under section 5, the hearing will be done by Juvenile Justice Board. If the board found that accused is between the age of 15 to 18 years and aggravated sexual assault is there, that the board can send the case to POCSO court. Next important provision, in case where accused and victim both are below 18 years of age and aggravated sexual assault is there, FIR can be lodged under the section 3 by 4, 5 by 6, 7 by 8, 9 by 10 and 11 by 12 of POCSO Act, and Juvenile Justice Board will hear the bail application in these cases. He accepted or rejected the bail. The appeal from the acceptance or rejection of the bail will be heard by the special judges of POCSO court. Another important aspect, if any person knows that sexual assault has been done with a child below 18 years of age, he must inform to police. मतलब अगर आप aggrieved person नहीं हैं, but you are the witness or you knows the offense of POCSO, you must inform the police. And if you has not done this, you can be prosecuted in the court of law and may be sentenced with the 6 months imprisonment. So some responsibilities same pattern lies on the companies or institutions, where head or in charge of the institutions must have to report these POCSO cases. And if they not reported these cases, he may be sentenced with the 1 year of imprisonment. Another important aspect, if false case has been lodged, then complainant will be prosecuted. Victim will not be prosecuted. Only complainant or guardian of the victim may be prosecuted. And at the time of records of statements of the victim in front of police or judges, the parents of the victim must be there, or any other person on whom the victim has confidence or faith may be present. Under section 27C, it is very important for you medical professionals where medical checkup must be done immediately after the sexual assault. In case of a girl, it must be done by female doctor, and it is not necessary to lodge FIR or file complaint before the medical examination. And a special POCSO court will be established, one in each district and more than one in big district and where the reported cases are more. But it is still not even in pipeline. It is the very drawback of the system or the implementation authority. While the reporting of cases are day by day increasing and pendency of the cases is at higher rate. Section 29, it is very important. It says the presumption of offense. In normal course, in any offense or in any crime,
the court presumes the innocence of the accused, and prosecution have to establish the commission of crime. While in the case of POCSO, it is a reverse burden. Means burden of proof lies on the accused, and he has to establish, or he has to prove that crime was not committed. And same section 30, it is also very important, where presumption of intention, where burden of proof on the accused that he has no intention. Generally किसी भी क्राइम में ऐसा माना जाता है कि ऐसा क्राइम हुआ है तो intention was there. But in the case of POCSO, intention को प्रूव करना accused के ऊपर है कि उसकी intention नहीं थी. तो जो accused है उसका intention and commission of crime जो other cases में presume किया जाता है, और प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता, कुछ भी प्रोसिक्यूशन को एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि उसकी इंटेंशन थी या कमीशन ऑफ क्राइम हुआ. लेकिन इन पॉक्सो केसेस दिस ऑल बर्डन लाइज ऑन द accused. Accused have to establish that he has not done that crime and he has no intention. Now, what are the key findings of last 10 years after enactment? Approximately 43% of POCSO case end in acquittals, while only 14% end in convictions. ये जो 10 years का डाटा है या जो सर्वे है उसको मैं यहाँ कोट कर रही हूँ. For every one conviction in a POCSO case, there are 3 acquittals. एक में conviction हो रहा है और 3 में acquittal हो रहा है. तो जो implementation of law है या जो society में loopholes हैं उनका ये result है कि POCSO cases में properly जो conviction होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. A study shows that only in 60% of the cases were the accused people strangers to the victim, while in 44% of the cases, the relationship between victim and accused has not been identified. 23% accused were known to the victim and 3.7% were family members, and 18% of cases had a prior romantic relations or affairs. In 2021, National Crime Record Bureau revealed that in 96% of cases filed under POCSO, the accused was a person known to the child victim. In 48.6% of cases, the accused is either a friend or a romantic partner of the victim. This is the survey of last year reporting of the POCSO cases. And 2019, the major amendments has been done in POCSO Act, and 2 punishments are increased. If accused is between age of 15 and 18 years, the imprisonment may be 20 years. And in case where the victim is below of age of 12 years and aggravated sexual assault proved, the accused may be punished with death penalty. It is the major, these 2 are the major amendments done in POCSO Act, and we hope it will change the perception of the people, और जो इस तरह का क्राइम करने की हिम्मत करते हैं उनको कुछ शायद यहाँ से लेसन मिले या वो उसको करने से पहले सोचें. Now, what are the challenges in courts proceeding, be it lawyers, be it judges, or be
the society. First of all, interpretation of act is not clear. It varies with the courts. कोर्ट्स के जो जजमेंट्स आ रहे हैं वो इतना वेरीज करते हैं कि लोअर कोर्ट्स का जजमेंट में एक्यूटल हुआ है और हाई कोर्ट कन्विक्शन हुआ है और हाई कोर्ट में जाकर वो एक्यूटल हो जाता है. लैक ऑफ एविडेंसेस, प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं पॉक्सो केसेस में. डिले इन रिपोर्टिंग में डिले होता है, तब तक एविडेंसेस वॉश आउट हो जाते हैं. लैक ऑफ प्रोसीजरल गाइडेंस, क्या प्रोसीजर है? हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं बिग सिटीज में, लेकिन जो रूरल एरियाज हैं या विलेजेस हैं, दे डजंट नो व्हाट इज द प्रोसीजरल एस्पेक्ट. सो अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द 60% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया. लैकिंग ऑफ जुवेनाइल कोर्ट्स इन स्टेट्स, कोर्ट्स, जुवेनाइल कोर्ट्स की कमी, क्योंकि पॉक्सो का केस पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही जाता है, उसके बाद ही वो पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर होता है. इन केस ऑफ यंगर चिल्ड्रन लाइक 5 to 8 years, they are comfortable tutor and the act easily misused by the complainant. छोटे बच्चे हैं, गांव में झगड़ा हुआ और वो एक चार्ज लगवा दिया कि इसने मेरे बच्चे के साथ या बच्ची के साथ, like Hindu laws and Muslim laws, where Sharia law is prevailing in Muslims, where age of puberty is only 15 years. 15 years girls is eligible to get marriage और marriage कर दी जाती है, and she doesn't know कि sexual assault मेरे साथ हो रहा है या marriage का ये रिजल्ट है. वो उसको समझ ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं है कि ये पॉक्सो एक्ट उन पर भी अप्लीकेबल है, क्योंकि एज ऑफ मैरिज जो है वो 18 इयर्स है. बट जो उनके पेरेंट्स हैं या जो सोसाइटी है वो अपने शरिया लॉ को वहाँ पर सामने लाती है. और ऐसा बहुत सारी केसेस में, चाहे वो शाहबानो का केस है या कोई और है, तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है. एंड इट इज़ द टाइम it should be enacted. As per POCSO Act, special courts has not been designated yet. अभी तक POCSO courts जो बात POCSO Act करता है अभी तक establish नहीं हुई है. Simply जो ADJ courts है या district courts हैं उनको स्पेशल कोर्ट देकर और उनको ये POCSO केसेस को डील करने के लिए अथॉरिटी दे दी गई है. बट बर्डन ऑफ केसेस इतना ज्यादा है उन कोर्ट्स पर कि वो जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं पॉक्सो केस को कन्विक्शन या एक्विटल या उनको डील करने में. वो फिर डेलीगेट कर देते हैं अदर कोर्ट्स को. लैक ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू हैंडल पॉक्सो केसेस, इट इज अ बिग ड्रॉबैक. पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी सेपरेट फॉर पॉक्सो केसेस. स्पेशल पुलिस, जो स्पेशल पुलिस का प्रोविजन है वो भी अभी तक नहीं हुआ है. सपोर्ट पर्सन, अभी मेरी बात हो रही थी CWC के चेयरमैन से कि यहाँ पर सपोर्ट पर्सन को शायद अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन आगरा इज अ बिग सिटी, लेकिन जो छोटे सिटीज हैं वहां पर सपोर्ट पर्सन very important role. He plays very important role till the complaint up to disposal of the case. The support person will always with the victim. ये प्रोविजन है पॉक्सो एक्ट में. वो गिल्टी फील करते हैं कि हमने रिपोर्टिंग कर दी. एंड सेम इन द सोसाइटी. विक्टिम फैमिली मेंबर्स वर थ्रेटेंड, धमकी मिलती है, केस वापस ले लो नहीं तो ये कर लेंगे, ये कर देंगे. बिग सिटीज को मैं तो बड़े बड़े लेवल की होती है, लेकिन गांव और रूरल एरियाज में तो छोटे छोटे मैटर्स में भी या तो फैब्रिकेटेड केसेस होते हैं और या अगर रियल में केस है तो वहां पर धमकी के द्वारा वापस ले लिए जाते हैं. और बहुत सारे केसेस में अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है.
या विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। लास्ट स्टेज पर आकर विटनेस हॉस्टाइल हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा। नेक्स्ट है 1 ईयर का जो टाइम लिमिट पॉक्सो एक्ट कहता है कि पॉक्सो केसेस विद इन अ ईयर शुड बी डिस्पोज विद इन द ईयर, बट 1 साल तो कोर्ट में मामला पहुंचते पहुंचते लग जाता है। उसके बाद जो टाइम लिमिट है उसको कोई नहीं याद रखता, वो डेट्स पर डेट्स पड़ती रहती है, एडजॉर्नमेंट होता रहता है। सो इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ सेपरेट कोर्ट्स। अगर सेपरेट कोर्ट्स हों तो मुझे लग रहा है कि स्पीडी ट्रायल होंगे और टाइम बाउंड होंगे। कन्विक्शन पूरी तरह से विक्टिम के स्टेटमेंट पर ही हो जाता। अगर विक्टिम का स्टेटमेंट इतना स्ट्रांग है तो उस पर ही कन्विक्शन हो जाएगा। ये पॉक्सो एक्ट में प्रोविजन है। और ऐसे बहुत सारे केसेस पिछले 3-4 सालों में हुए हैं जहां पर जो कन्विक्शन है बहुत ज्यादा हुआ है। कभी कभी स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं विक्टिम के, ही और शी, और अंडर द प्रेशर आसानी से उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है कि नहीं उसका तो ये बयान था, इसका मतलब ये था। एक केस था जिसमें भाभी के भाई ने, मतलब सिस्टर इन लॉ के ब्रदर ने रेप किया। शी मैट हर ऑन द वे एंड ही रेप्ड हर। जब उसने विक्टिम ने कंप्लेंट के लिए बोला अपने भाई को, तो जो उसकी भाभी थी उसने कहा अरे मैं दहेज का मुकदमा लगा दूंगी, सबको जेल के अंदर कर दूंगी अगर रिपोर्टिंग की तो। और भाई भी अपनी वाइफ के फेवर में, नॉट इन द फेवर ऑफ सिस्टर। तो ऐसी सिचुएशन में वेयर शी विल स्टैंड और वेयर विक्टिम विल स्टैंड। केस रिपोर्टिंग इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बट जैसा मेरा डिस्कशन हुआ या बात हुई उसमें देखा है कि जो हाईएस्ट रिपोर्टिंग है वो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप्स में है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे मिसयूज द पॉक्सो एक्ट, while in middle class the reporting is at very nominal rate, and higher society rarely। जबकि ये जो ऑफेंस है ऐसा नहीं है कि ये एक सेक्ट ऑफ सोसाइटी में हो रहा हो, सब जगह हो रहा है। पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है और ट्रायल इसीलिए स्मूथली नहीं चल पा रहे हैं। एंड सोसाइटी, फैमिली plays a big role in this area, and above all the mindset of the people or the society, it should be changed। हम इंतजार करते हैं कि निर्भया का केस हो, जब निर्भया का केस होता है तो फिर हम एकदम से जाग जाते हैं। वर्मा कमेटी बनती है, अमेंडमेंट होता है 376 में। क्या हम पॉक्सो में भी एक निर्भया का वेट कर रहे हैं? वी शुड चेंज आवर माइंडसेट, इट इज पैरामाउंट। वन मोर थिंग टू बी एडेड, दैट verdict from courts are very astonishing। जो मैंने पहले भी अभी कहा था, in some cases or we can say insensitive judgments, कुछ ऐसे जजमेंट्स आ रहे हैं जो वेरी इंसेंसिटिव हैं पॉक्सो एक्ट के केसेस में, पॉक्सो के केसेस में। जैसे मैंने अभी बॉम्बे हाई कोर्ट का केस यहाँ पर कोर्ट किया था। At the end, I would like to say that every single act which was enacted
with good intent to provide protection has been misused very badly. Spate of decisions of Supreme Court suggested a number of times these statutes have been misused. So don't misuse this POCSO, and we should come forward with clear heart. Thank you. Thank you. Thank you very much, ma'am. Very rightly said, most of the harassment cases are not being reported, maybe due to the social stigma or the mindset of the people. I would like to request Dr. Richa Gupta, ma'am, Head of the Department of Forensic Medicine and Toxicology, to kindly felicitate our guest speaker, Lieutenant Dr. Rita Nigam, ma'am. A huge round of applause.